Hello students, my name is Mohit Saxena and today's topic algebraic condition of pair of linear equation. So इस टॉपिक में हमें क्या पढ़ना है कि कितने टाइप की कंडीशंस फॉर्म होती है लीनियर इक्वेशन में, वेरिएबल्स में, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में. सपोज इक्वेशंस a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 and a2x plus b2y plus c2 is equals to 0. Two equations are formed. So this one is equation number 1 and equation number 2. In equation 1, condition 1, suppose a1 and a2 is not equals to b1 b2. So solutions are unique. Solutions are unique solution. यूनिक सोल्यूशन मीन्स अगर दो इक्वेशन के रेशियोज a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इक्वल नहीं है तो उनका एक सोल्यूशन आएगा ही आएगा. सेकंड केस, इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 एंड इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2. So in this case, no solution, no solution. यहाँ पे कोई भी solution नहीं आएगा दो इक्वेशन का अगर a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2. तो ये हमारा क्या हो जाएगा? नो solution. थर्ड वन, a1 अपॉन a2 b1 upon b2 and c1 upon c2. So infinite solution. तो किस टाइप का ये सोल्यूशन बनेगा? इनफाइनाइट और मेनी सोल्यूशन. तो इसी पे क्वेश्चन करते हैं कुछ. सो फर्स्ट क्वेश्चन, 3x minus 3y minus, so two questions are given. So first equation is 3x minus 3y minus 3 is equals to 0 and 3x minus 9y minus 2 is equals to 0. तो ये किस टाइप का सोल्यूशन मिलेगा हमको? यूनिक या नो सोल्यूशन या इनफाइनाइट सोल्यूशन. So a1 is equals to solution, a1 is equals to 1, b1 is equals to minus 3 and c1 is equals to minus 3. Next, a2 is equals to 3, b2 is equals to minus 9 and c2 is equals to minus 2. So a1 upon a2 is equals to 1 by 3 and b1 upon b2 is equals to minus 3 by minus 9, negative cancel and simplest form 9 by 3, 3 by 9 is equals to 1 by 3 and c1 upon c2 minus 3 by 2 minus 2 cancel 3 by 2. So a1 upon a2 is equals to b1 upon b2. a1 upon a2 कितना है? 1 by 3 and b1 upon b2 कितना है? 1 by 3. Both are equal but not equals to c1 upon c2. So in this case they have no solution. According to the condition, a1 upon a2, b1 upon b2 are equal, but it is not equals to the ratio of constant term. Corresponding ratio of constant term are not equal, so it is no solution. तो इसमें हमको क्या मिलेगा? नो सॉल्यूशन. चलिए सेकंड पार्ट क्या है क्वेश्चन का? सेकंड पार्ट, a1 is equals to 2, b1 is equals to 1 and c1 is equals to 5 comes to the left side which is equals to minus 5. a1 is equals to 3, b2 is equals to 2 and c2 is equals to minus 8. a1 upon a2 is equals to 2 by 3
एंड b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू 1/2। तो यहाँ पे हमको डायरेक्ट यही दिख रहा है कि a1 अपॉन a2 इक्वल नहीं है b1 अपॉन b2 के। सो हैंस a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। सो विच टाइप ऑफ सोल्यूशन? It is unique solution. Why? Because according to the condition a1 upon a2 is not equals to b1 upon b2. It is unique solution. So ये था हमारा कॉन्सेप्ट, कैसे हम चेक करें कि किस टाइप का सोल्यूशन फॉर्म होगा, यूनिक और नो सोल्यूशन और इनफाइनाइट सोल्यूशन। अब इनफाइनाइट सोल्यूशन कैसा होता है? एक क्वेश्चन इनफाइनाइट सोल्यूशन पे, क्वेश्चन इज x माइनस 3y प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0 एंड 4x माइनस 12y प्लस 24 इज इक्वल्स टू 0 वेयर a1 इज इक्वल्स टू a1 is equals to 1 and a2 is equals to 4. Similarly, b1 upon b2, b1 is equals to minus 3 and b2 is equals to minus 12. तो cancel 1 upon 4 and c1 upon c2, c1 upon c2 6/24 cancel and 1/4. Then a upon a2, b upon b2, c1 upon c2 are equal. a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is equals to c1 upon c2. Then equations are infinite solution form करेंगे. It is infinite solution. ये हमारा कौन सा सोल्यूशन होगा? इनफाइनाइट सोल्यूशन. क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे हमारे a b c के रेशियोज क्या हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग रेशियोज क्या हैं? इक्वल. So students, question is 2x plus 3y is equals to 7 and a minus bx a plus by is equals to 3a plus b minus 2. So it is infinite solution. According to the question, it is infinite solution and find the value of a and b. हमको इस क्वेश्चन में क्या करना है? हमको दो इक्वेशंस गिवन है और ये इक्वेशन का जो सोल्यूशन है वो किस टाइप का है? इनफाइनाइट सोल्यूशन. So first be a1 is equals to 2 and b1 is equals to 3 and c1 is equals to minus 7. Why minus 7? Because 7 comes to the left hand side. a2 is equals to a minus b and b2 is equals to a plus b. यहाँ पे हमने कैपिटल b क्यों लिया है? क्योंकि यहाँ पे स्मॉल a एंड स्मॉल b ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन है. एंड c1 is equals to minus 3a plus b minus 2. So it is infinite solution. In infinite solution condition is a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2, where a1 is equals to 2 and a2 is equals to a minus b and b1 is equals to 3 and b2 is equals to a plus b and c1 is equals to minus 7 minus 3a plus b minus 2. So next step, cross multiplication. So first two ratios in cross multiplication, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं. टू मल्टीप्लाई बाई a plus b and 3 multiply by a minus b. So 2a plus 2b and 3a minus 3b. And 2a comes to the right hand side and 3 minus 3b comes to the left side. So a is equals to 5b. a is equals to 5b. अब हमको क्या कहना है? फर्स्ट और सेकंड को लेते हैं, फर्स्ट एंड थर्ड, सॉरी
फर्स्ट एंड थर्ड. So 3 multiply by, so negative cancel, 3 multiply by 3, 9a, and 3 multiply by b, 3b, and 3 multiply by minus 2 into 3 is minus 6, and a plus b multiply by 7, 7a plus 7b. So 7a comes to left side, 7 minus 2, 9 minus 7 is equals to 2, and this plus 7b comes to the left side, negative, it is positive, minus 4b is equals to 6, and a is equals to 5b. So 2 into 5b minus 4b is equals to 6, and 2 into 5, 10b minus 4b is equals to 6, then 6b is equals to 6, and both sides 6 cancel, then b is equals to 1. अब b की वैल्यू हमको क्या मिल गई? 1. Then b put the value of b in equation 1, then a is equals to 5b and b is equals to 1, so a is equals to 5. So answer is a is equals to 5 and b is equals to 1. Very very important question for examination, board point of view. Okay, I try next question. Question is 3x plus y is equals to 1 and 2k minus 1x and k minus 1y and 2k plus 1, and it is no solution. Find the value of k. Find the value of k. So first of all, a1 is equals to 3, b1 is equals to solution, b1 is equals to 1 and c1 is equals to minus 1, and a2 is equals to 2k minus 1, b2 is equals to k minus 1, and c2 is equals to 2k plus 1 minus. According to condition it is no solution, and no solution condition, a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is not equals to c1 upon c2, where a1 is equals to 3, a2 is equals to 2k minus 1, and b1 is equals to 1 and b2 is equals to k minus 1, and c1 is equals to minus 1 and minus 2k plus 1, bracket close. And cross multiplication, 3 into k, 3k, 3 into 1 minus 3, and 1 multiply by 1 any number itself. अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सेम इट इज. सो 2k comes to right side, left side, minus 2k, and minus 3 comes to right side, minus 3 plus 3. So 2 is equals, k is equals to 2. सो k इज इक्वल्स टू 2. ये था हमारा सेकेंड क्वेश्चन. ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में पूछा जाता है. वेरिएबल्स की वैल्यू इसी पे क्वेश्चन बेस्ड आते हैं. सो आई होप स्टूडेंट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा. कंडीशंस क्या होती हैं एल्जेब्रिक लीनियर इक्वेशंस की. थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो.